Hello, everyone. According to this question, for given value of u means projectile is projected with initial velocity u. There are two angles of projection. There are two angles of projection for which the horizontal range is the same, so that the sum of the maximum height for these two angles is independent of the angle of projection. In simple way, at two angles of projection, horizontal range is the same, so that आपको प्रूव करना है the sum of maximum height of these two angles of projection is independent of angle of projection. Means two angles of projections पर horizontal range आपका सेम है, तो उन्हीं angles पर these angles of projection, the sum of height, the sum of maximum height is independent of angle of projection. That's clear? You know that sine 180 minus theta is equal to sine theta. 180 minus theta belongs to second quadrant. In second quadrant, sine is positive. Horizontal range r is equal to u square sine 2 theta upon g at angle of projection theta. तो देखिए साइन टू थीटा थीटा रिप्लेस बाय 90 माइनस थीटा, टू थीटा टू मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो थीटा रिप्लेस बाय 90 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस 2 थीटा, साइन 2 थीटा हो गया ना बेटा। तो एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा टू 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा आपने क्यों लिया है, यहाँ 2 से मल्टीपल है ना, 2 थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आर डैश u square sin 2 90 minus theta upon g r dash is equal to u square sin 180 minus 2 theta upon g r dash is equal to u square sin 180 minus 2 theta sin of 2 theta. That's clear? It's equal to r. So from question two angles of projection for which the horizontal range is the same. So angle of projection theta and 90 minus theta. At these angles of projection, sum of maximum height is independent of angle of projection. ये फाइंड करना है आपको। तो देखिए हाइट h1 u स्क्वायर sin square theta upon 2g at angle of projection theta 1 is equal to theta, at theta 2 is equal to 90 minus theta, so u square sin square 90 minus upon 2g. You know that sin 90 minus theta belongs to first quadrant. फंक्शन चेंज होगा 90 माइनस थीटा, तो साइन चेंज इनटू कॉस, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा, ये यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, सम ऑफ मैक्सिमम हाइट h1 प्लस h2, सम ऑफ h1 प्लस h2, तो u स्क्वायर अपॉन 2g टेकिंग कॉमन u स्क्वायर अपॉन 2g sin square theta plus cos square theta. That's clear? h1 plus h2 sin square theta plus cos square theta 1. The sum of maximum height at these angles of projection is independent of angle of projection. Angle of projection पर depend नहीं कर रहा. That's clear? Got it? Okay.